Hello everyone, good morning. How is everyone doing today? Welcome back to Unacademy. I hope I'm clearly audible and visible to everyone watching me live. Very good morning. पर जल्दी से बता दो सब ऑडिबल है, विजिबल है, सब क्लियर है तो हम स्टार्ट करेंगे सेशन के साथ. हाय विशाल, गुड मॉर्निंग. सब क्लियरली ऑडिबल विजिबल है, राइट? Okay. So there is a poll that I have given you in the Telegram group. अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो, मैं आपको लिंक दिखा देती हूँ. That's the scanner that's going to take you to my Telegram group. इस टेलीग्राम ग्रुप में पिंड एक कमेंट है which is the link to our discussion group. डिस्कशन ग्रुप में आओ, वहां एक पोल चल रहा है. I want you guys to go and answer that poll. And the reason why the poll has appeared there is that I'm thinking of something and I want your opinion on that. So, Imran, you've already answered. And others who are watching me live, एक बार जाके उस poll में answer कर देना. कुछ discussion चल रहा है. I want your opinion on that so that you are benefited the most out of it. और एक बार जल्दी से before we start the session, हम देख लेते हैं हम क्या करने वाले हैं. तो इस सेशन में ना हम एडिटोरियल ड्रिल्स करते हैं. हम क्या करते हैं, बड़ी अनकन्वेंशनल तरीके से, जैसे बाकी लोग कराते हैं वैसे नहीं. हम क्या करते हैं, हम एडिटोरियल्स तो लेते हैं, उसको समझने की कोशिश भी करते हैं, बट हम उसको आरसीज बना के भी लेके आते हैं. सो व्हाट वी डू इज, आज हमारे पास जैसे सोसाइटी पे एक आर्टिकल है, तो हम उस आर्टिकल्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसकी वोकैबुलरी सीखेंगे. वोकैबुलरी में सोसाइटी के जॉनरे पे कैसे वर्ड्स आते हैं, जो जॉर्गन्स है, टेक्निकल वर्ड्स है, पहले वो समझेंगे, फिर फिलोसफिकल वर्ड समझेंगे, फिर हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड समझेंगे. आज 3 स्लाइड्स है वोकैबुलरी की. बहुत ही अच्छी वोकैबुलरी है. डिफिकल्ट वोकैबुलरी आप लोगों को लग सकती है आर्टिकल की. गार्डियन से ये आर्टिकल में लेके आई हूँ, ठीक है? तो प्लीज वोकैबुलरी में आज बहुत अटेंटिवली ध्यान देना. आई एम श्योर इससे आपकी वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव होगी. अगर वोकैबुलरी नहीं समझ में आएगी तो आपके लिए आर्टिकल समझना डिफिकल्ट हो जाएगा. आर्टिकल का लैंग्वेज डिफिकल्ट है, कंसेप्ट डिफिकल्ट नहीं है, लॉजिक डिफिकल्ट नहीं है. तो लैंग्वेज अगर आपको प्रॉब्लम समझने में आती है तो वो आपका स्पीड बैरियर भी हो जाता है, इन्फ्रेंस का बैरियर भी हो जाता है. सो वी विल लर्न द वर्ड्स फर्स्ट और फिर हम आर्टिकल पढ़ेंगे. फिर उस आर्टिकल को हम एक आरसी बना के लेके आए हैं जिसपे 4 क्वेश्चन है, जैसे कैट में आते हैं. तो एक इन्फरेंस है, एक मेन थीम है, एक टोन है, एक क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और इन द मीनवाइल हम इसका एक माइंड मैपिंग बनाने की कोशिश करेंगे पॉजिंग अनपॉजिंग टेक्निक से. वी विल पॉज आफ्टर एवरी पैराग्राफ. वी विल आस्क आवरसेल्व्स कि पैराग्राफ क्या बात कर रहा है. ओके, तो जल्दी से स्टार्ट करते विद आवर एजेंडा, बट उसके पहले we have approximately 50% off going on our subscription fees right now, an all-time low of 15,999. You will be able to subscribe to our programs at this price. So you can use our code ALPA10. ये code use करके you will be able to enroll yourself at this pricing for our programs. Do that right now. See us in the batches very soon. Any more doubts, you can call our counselors on this number. They'll help you out. दूसरा, हमारा कैट 25 का रैंक इंप्रूवमेंट बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है बैच को, जल्दी से कर लेना. यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम रियल IIM कॉल गेटर्स एंड टॉप मेंटर्स अक्रॉस द कंट्री. डू दैट राइट नाउ. सी अस इन द बैचेस सून. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, UCST हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट bigger than ever is going to be happening on 27th of July. 2 स्लॉट्स में होगा, 12:30 PM, 5 PM. आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक स्लॉट बुक करो, एनरोल फॉर इट राइट नाउ, एंड यू कैन गेट अप टू 90% स्कॉलरशिप एज वेल एज अ लैपटॉप प्लस 1-to-1 मेंटरशिप सेशन एंड मल्टीपल अदर थिंग्स. तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट तो बिल्कुल मिस नहीं करना है. लो स्कोर देखो आप कहाँ स्टैंड करते हो, एंड यू माइट इवन विन सो मेनी अदर थिंग्स अलोंग. ठीक है, तो हाय उदिता, गुड मॉर्निंग. स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वोकैबुलरी के साथ. आर्टिकल का टॉपिक एक बार देखते हैं ताकि वोकैबुलरी और अच्छे से समझ में आए. ठीक है, आर्टिकल का टॉपिक है अगेन एंड अगेन वी आर शॉक्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड पीपल, जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ADHD, ये एक तरीके की डिसेबिलिटी है. बहुत सारे और टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज आप पैराग्राफ में देखोगे. येट वी नेवर लर्न फ्रॉम द पास्ट.
दैट्स व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट। तो आपको सुनने में लग रहा होगा क्या लर्निंग डिसेबिलिटी और उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये तो बड़ा ही सिंपल आर्टिकल है। इट साउंड सिंपल बट इसकी लैंग्वेज ट्रिकी है। तो आज हम सबसे पहले वोकैबुलरी करते हैं। वी हैव साइंटिफिक, लीगल और सोशल वोकैबुलरी पे पहला स्लाइड। तो मेरा इमेज में थोड़ा सा छोटा कर देती हूं ताकि आप लोगों को वोकैबुलरी देखने में प्रॉब्लम नहीं हो। Here we go with our very first slide. एक एक करके वर्ड्स करते हैं, सिनोनिम्स माइंड में आएंगे तो बताते जाइए, कोई और डाउट अगर आपको है तो वो भी बताते जाइए। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है? एक इंडिविजुअल अगर लर्निंग के साथ स्ट्रगल करता है, उसको, जैसे आपने तारे जमीन पे मूवी देखी है ना, उस बच्चे को भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी थी। तो बहुत सारे बच्चे आर बॉर्न विद सर्टेन लर्निंग डिसेबिलिटीज, कुछ डेवलप कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने, आई एम श्योर आप सब ने देखा होगा कि कैसे आजकल बच्चे बिना मोबाइल के खाना ही नहीं खाते हैं। देखा होगा ना, 100% देखा होगा। एंड हाउ दे आर सो एडिक्टेड टू द स्क्रीन टाइम कि स्कूल से आएंगे तो भी मोबाइल चाहिए, दिन में कम से कम 3-4 घंटे दे हैव टू ईदर प्ले गेम्स और वॉच स्क्रीन्स। दिस ऑल्सो इज अ रीजन वाई लर्निंग डिसेबिलिटीज अब एक ग्रोथ रेट पे हैं। ठीक है, सो वाइल यू वर यंगर, आई एम श्योर ये कल्चर नहीं था, वाइल यू वर बॉर्न एंड वाइल यू वर लर्निंग टू ईट डिफरेंट थिंग्स, बट अब ये काफी ही प्रोमिनेंट कल्चर हो गया है एंड आई हैव टोटल अपोजिशन टू दैट। बट ये भी एक रीजन है वाई स्टूडेंट्स, किड्स हैव लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो जब लर्निंग में कोई प्रॉब्लम आती है उनको, इट कुड बी जेनेटिक, इट कुड बी इनहेरिटेड, इट कुड बी समथिंग दैट दे हैव डेवलप्ड एज वेल। ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। दूसरा वर्ड है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, अ प्लेस, something that is placed into a long term care facility often against one's will is institutionalized. Institutionalized के various meanings है, पैसेज के रेफरेंस में समझो। अगर असाइलम पता है आप लोगों को क्या होता है, जिसको हम हिंदी में पागल खाना बोलते हैं। तो असाइलम, पागल खाना इज अ वेरी वेरी रॉन्ग वर्ड, दो मैं ना इसके यूजेज के बिल्कुल अगेंस्ट हूं। असाइलम में अगर आपने किसी को उनके विलिंगनेस के अगेंस्ट डाल दिया, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी है कि वो वहां उसका ध्यान रखा जाएगा क्योंकि वो एक स्पेशली एबल्ड पर्सन है और वो पर्सन वहां नहीं रहना चाहता, बट येट वी फोर्स द पर्सन टू स्टे देयर। द पर्सन हैज बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन दैट सेंस। तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के बहुत सारी मीनिंग्स है, बट फ्रॉम द रिस्पेक्ट ऑफ द पैसेज, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इज जब आप किसी पर्सन को उनकी विलिंगनेस के अगेंस्ट एक लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी में छोड़ के आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड यूजेनिक्स। वर्ड को ब्रेक करो। EU, EU is a root word which means good, like euphoria. Okay, you feel very good, ecstatic feel करते हो, वो euphoric हो गया। EU means good. Gen, genes से आया, जो आपने inherit किया। So a discredited movement into improving genetic quality by selective breeding. आपने genetic quality को और अच्छा बनाने के लिए, to make it better, आपने selective breeding करी। That process is called eugenics. Animals में eugenics बहुत commonly किया जाता है, अब वो humans में भी धीरे धीरे आने लग गया है। Political asylum में बिल्कुल कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हैं। आई एम सो प्राउड कि आपको पॉलिटिकल असाइलम पता है। अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो इट। क्या आपको विकीलीक्स के बारे में पता है, इमरान? और आपको पता है कि कैसे उनके फाउंडर को पॉलिटिकल असाइलम में इतने साल रहना पड़ा? पता है आपको विकीलीक्स? हाँ विशाल, दैट्स असाइलम, करेक्ट। वन सेकेंड गाइस। यस, सो जूलियस असांज थे। अगर आपको इनकी स्टोरी नहीं पता है ना, तो आज मैं आपको एक रीडिंग के लिए मटेरियल दूंगी इन द टेलीग्राम ग्रुप। आपको लगेगा ये तो मूवी की स्टोरी है भाई, इतना ड्रामेटिक। ऑल्दो हाँ, मैं तो आज आर्टिकल शेयर करूंगी मैं ये, ठीक है इमरान? इट्स वेरी ड्रामेटिक। आपको लगेगा भाई ये तो जैसे बॉलीवुड की सलमान खान की मूवी हो गई है। इट्स
funny, yet it's very heartbreaking. Yes, the whistleblower. Correct, विशाल. तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत रीसेंट नहीं है ये होगी आज से 3 साल पुरानी बात। बट ये इसके भी पहले जूलियन असांज, ये उसके भी बहुत पहले से असाइलम में थे। तो मैं आर्टिकल शेयर कर दूंगी आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में, आज पढ़ना आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल होगा, उस पर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आते हैं कॉड साइकोलॉजी पे। डिसमिसिव टर्म यूज्ड फॉर सुपरफिशियल और अनसाइंटिफिक साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कुछ थ्योरीज पे डिपेंडेंट होती है, वो थ्योरीज स्टडी पे डिपेंडेंट होती है। स्टडीज होती हैं बहुत सारी और उससे कुछ थ्योरीज निकाली जाती हैं, लेकिन ऐसी कोई थ्योरी जो कि किसी भी साइंटिफिक प्रोसीजर को नहीं फॉलो करती, मैंने मेरे मन में बना ली कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये कोई साइंटिफिक लॉजिक तो है नहीं, है ना, कि ज्यादा फोन देखोगे तो यूल गो मैड, कोई साइंटिफिक तो है नहीं है, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। तो ऐसे साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो कि सुपरफिशियल है, इन डेप्थ नहीं है, अनसाइंटिफिक है, उनके लिए हम कॉड साइकोलॉजी वर्ड यूज करते हैं। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट। ये एक्ट आपको दिखेगा पैसेज में। 1913 में यूके ने एक एक्ट पास किया था जहां डिसेबल्ड लोगों को फोर्स्ड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के लिए भेजा जाने लगा था। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दैट? पहले चीज तो ये, मुझे तो ये वर्ड डिसेबल्ड भी यूज करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई वुड वॉन्ट टू यूज अ वर्ड स्पेशली एबल्ड, क्योंकि अगर ऊपर वाले ने, द सुप्रीम ऑलमाइटी हैज गिवन अ पर्सन सम डिसएबिलिटी, दे आर इवेंचुअली, विशाल आपने और मैंने ये बात करी भी थी कि दे हैव सम एबिलिटी जो हम सबसे बेटर होती है, तो वो एक्चुअली स्पेशली एबल्ड है इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम डिसेबल्ड। बट 1913 में यूके ने क्या बोला, जितने भी ये डिसेबल्ड लोग हैं ना, इनको फोर्सफुल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में भेज दिया जाए क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के लिए अनफिट है। ऐसा ही कुछ कुछ हिटलर ने किया था ना, किया था कि स्पेशली एबल्ड, जूस, ये सारे अनफिट हैं, तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में तो बहुत पैसा लगेगा, मार दो उन सबको। डिफरेंटली एबल्ड, स्पेशली एबल्ड, करेक्ट। सो दैट्स द नेक्स्ट वर्ड। मोर्टैलिटी रेट, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, बट क्योंकि ये एक इकोनॉमिक वोकैबुलरी है, इसको भी करना जरूरी है। डेथ रेट ऑफ गिवन पॉपुलेशन। अभी अगर आप मोर्टैलिटी रेट हमारी कंट्री की कंपेयर करोगे टू द मोर्टैलिटी रेट 100 years बैक, हमारी मोर्टैलिटी रेट बढ़ गई है या कम हुई है? बढ़ गई मतलब मोर पीपल आर डाइंग, कम हो गई मतलब लेसर पीपल आर डाइंग। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मोर्टैलिटी रेट 100 years, एक सेंचुरी पहले क्या थी और अभी क्या है? क्या हमारे कंट्री में मोर्टैलिटी रेट कम हो गई है, लेसर नंबर ऑफ पीपल डाई अर्लियर, या फिर मोर? Although we see more diseases, right? But what do you think about the mortality rate currently in the country? It has reduced because of a lot of invention, medicines, treatments coming up. You might be thinking कि और हमारे एल्डर्स बोलते भी कि पहले तो ऐसी बीमारियां नहीं होती थी, आजकल इतने यंग एज में इतनी बीमारियां होने लग गई। पहली चीज, बीमारियां पहले भी होती थी, पता नहीं लगता था। We have treatments and tests now. दूसरा, बीमारियां थोड़ी सी बढ़ी हैं बिकॉज ऑफ द पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, कैंसरस डिजीजेस, कार्सिनोजेंस जिनमें ज्यादा हैं। कोविड में इंक्रीज हुई थी, ऑफ कोर्स, वो तो एक पैंडेमिक था, है ना, तो बट उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवर अ डेकेड की बात करेंगे, ओवर अ सेंचुरी की बात करेंगे। सो यस, थोड़ी सी इंक्रीज हुई है मोर्टैलिटी रेट कंपैरेटिवली, बीमारियां इंक्रीज हुई हैं, बट उसकी मोर्टैलिटी रेट काफी रिड्यूस हो गई है। नेक्स्ट वर्ड, ऑटिज्म। दिस इज, अगर आप पैराग्राफ के लैंग्वेज में बोलोगे तो ये एक डिसेबिलिटी है। ओके, तो ये आपके चेकअप से ही आपको पता लगती है इफ अ चाइल्ड इज ऑटिस्टिक और नॉट। दिस इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन दैट अ चाइल्ड इज बोर्न विथ। ओके, ये क्रोमोसोम्स का काम होता है कि अगर क्रोमोसोम एक भी एक्स्ट्रा हो गया in the body, a child can be categorized as an autistic one.
इसके लिए बहुत सारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती हैं, ट्रीटमेंट्स होते हैं, जहां आप बच्चे को अलग अलग थेरेपीज के लिए लेके जाते हो, तो बच्चा काफी इंप्रूव कर जाता है अगर अर्ली एज में ऑटिज्म डिटेक्ट हो गया तो। बट 1913 में क्या बोला गया था? भैया फोर्सफुली असाइलम में भेज दो, ऑटिस्टिक है बच्चा तो। Autism is one of the most frequently seen visible disability that we can see these days. Assessment unit, a facility for evaluating mental और developmental condition. तो assessment unit तो कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ हम क्योंकि mental disorder की बात कर रहे हैं, जहां mental conditions, developmental conditions मैप की जा सके, वो हुआ assessment unit. Self advocacy, representing and standing up for oneself, especially in social polity. If I think something is right for my child and I teach my child self advocacy, my child can get up in a society and say, no, this is what's right for me and that's what I'm going to do. That's self advocacy. अपने लिए खड़े होना, अपने लिए बोलना, अपने लिए लड़ना, अपने आप का एडवोकेट बन जाना is self advocacy. यूजुअली एक सोसाइटी में स्टैंड लेने को हम अपने लिए स्टैंड लेने को सेल्फ एडवोकेसी बोलते हैं कि ये मेरे लिए सही है, मैं यही करूंगा. Prejudice is bias. एक प्री कंसीव्ड ओपिनियन आपने बना लिया है. जैसे ये जो लॉ था ना, ये एक प्रेजुडिस लॉ था. ये प्री कंसीव्ड ओपिनियन पे था कि ये जो डिसेबल लोग हैं इनको क्योर किया नहीं जा सकता, इसलिए इनको अलग ही रख दो. नॉट बेस्ड ऑन रीजन और एक्सपीरियंस बट ऑन अ बायस. कुछ लोग किसी जेंडर के अगेंस्ट बायस्ड होते हैं, कुछ लोग क्वियर एलजीबीटीक्यू के अगेंस्ट बायस्ड होते हैं, प्रेजुडिस्ड होते हैं, है ना? आपने देखा होगा, आई एम श्योर. ऑल राइट, तो ये फर्स्ट स्लाइड है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे. स्क्रीनशॉट ले लिया तो हिट द लाइक बटन राइट नाउ. थैंक यू इफ यू हैव डन दैट ऑलरेडी. Slide number 2. This is general and philosophical vocabulary. Centenary is 100 years जब पूरे हो जाते हैं. यूजुअली ये एक सेलिब्रेशन के साथ होता है, बट किसी बैड इवेंट के लिए भी हम सेंटेनरी बोल सकते हैं. सेंचुरी से सेंटेनरी आया, सिमिलर साउंडिंग वर्ड. 100th ईयर जब पूरा होता है वो सेंटेनरी ईयर होता है, 100th एनिवर्सरी. ओके. ब्लर्ब, अ शॉर्ट प्रमोशनल समरी ऑन अ बुक और प्रोग्राम. जैसे हम शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं ना, एक नई चीज चालू होने वाली है. कल मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए शूट किया है, शॉर्ट में आएगा. बिहाइंड द वीडियो दैट यू सी, व्हाट इज आवर सेटअप लाइक, हम कौन से कैमराज यूज करते हैं, क्या लाइट्स, कैमरा एक्शन, सब क्या होता है, व्हाट इज द स्ट्रगल वी गो थ्रू, इज गोइंग टू बी लाइव वेरी वेरी सून, वेरी लाइकली दिस वीक. आई हैड अ लॉट ऑफ फन शूटिंग दैट फॉर यू. द ब्लर्ब इज लाइक अ शॉर्ट प्रमोशनल समरी जो बुक का या प्रोग्राम का होता है. हम शॉर्ट वीडियोस में बताते हैं ये आने वाला है, ये इवेंट आने वाला है. दैट्स अ ब्लर्ब. क्रिटिक, एक तो होता है क्रिटिकल होना, ठीक है, वो होता है कमियां निकालना. फिर आपने मूवीज देखी होंगी, उसमें एक व्यूअर्स रेटिंग होती है, क्रिटिक रेटिंग होती है. क्रिटिक्स रेटिंग किन चीजों पे डिपेंडेंट होती है? व्यूअर्स रेटिंग देखो, सलमान खान की मूवीज की एब्सोल्युटली हाई होती है, बट उनकी क्रिटिक्स रेटिंग बहुत ही लो होती है. क्रिटिक्स रेटिंग में क्या चीजें देखी जाती हैं? सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, एक्टिंग, प्रोडक्शन, clothing, all of it comes into place. Dialogues. So किसी भी चीज को डिटेल्ड एनालिसिस करके एक वर्डिक्ट देना, वो एक क्रिटिक का काम होता है. कमियां निकालना वाला क्रिटिकल नहीं, डिटेल्ड एनालिसिस करने वाला क्रिटिक. Did you understand the difference between both, everyone? स्टोरी लाइन भी उसका एक फ्रैगमेंट होता है, करेक्ट इमरान. Okay, so I hope you've understood the difference between critical analysis and a critique. Next word पे चलते हैं. Flinching. Suddenly pain हुआ, so you flinch. This kind of reaction is flinching. Strong feeling, surprise, not surprise, strong feeling because, or strong reaction because you have a certain kind of pain or fear. He flinched in pain. इंजेक्शन लगता है तो फ्लिंचिंग होती है ना,
that kind of reaction, that sudden reaction is flinching. Next word, shocking मैं नहीं समझा रही हूँ, demanding मैं नहीं समझा रही हूँ, reckoning पे आते हैं, ठीक है? When you acknowledge something, a moment of judgment or critical evaluation, किसी भी चीज को आपने recognition दिया, आपने माना और आपने accept किया, is reckoning. आपको समझ में आई इवेल्युएशन के बाद वो चीज. आई रेकन, अगर मैं आपका मॉक एनालिसिस कर रही हूं, आई कैन यूज द स्टेटमेंट, आई रेकन यू नीड टू इंक्रीज योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. ओके, सो मैंने क्रिटिकल इवेल्युएशन किया, मैंने एक जजमेंट दिया, दैट इज रेकनिंग. ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड, मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन इज, ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं, आजकल इंस्टाग्राम ने मैनिफेस्टेशन इतना पॉपुलर कर दिया है, इतना पॉपुलर कर दिया है, बार बार बोलते रहो वही चीज वही चीज वही चीज, आप मैनिफेस्ट करो और वही आपके साथ होगा. सुना है ना ऐसा कुछ कुछ कुछ? देखो, आप मेरे से अगर पूछोगे, आई हैड गुड नंबर ऑफ मोर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस देन यू हैव, है ना, कंसिडरिंग माई एज दैट आई एम गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 40 दिस ईयर. मैनिफेस्टेशन मुझे नहीं पता क्या होता है, बट वन थिंग आई स्ट्रांगली have thought about myself across my life, Hamesha, and that is, I totally believe in the Almighty and I work hard. These two things will put everything else in place. Ki my Almighty will not let anything bad happen to me. I have trust in Him. And two, I work really hard. मैं बहुत मेहनत करती हूँ. तो इन दोनों रीजंस की वजह से ना मेरे साथ कुछ खराब होगा नहीं, और कुछ होगा भी, that Almighty is going to handle this. He's going to give me that mental strength to be able to deal with it. That is the kind of manifestation I do. Instead of बार बार यही बोलते रहना कि अल्पा शर्मा is the best educator in the world, अल्पा शर्मा is the best educator in the world, और मैं हार्ड वर्क ही नहीं करूंगी और मैनिफेस्ट करती रहूंगी, तो क्या होगा मेरे साथ? कुछ नहीं होगा. So there is no shortcut to hard work, but हाँ, मैनिफेस्टिंग ये जरूर करना चाहिए कि मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, एंड आई हैव सीन अ ड्रीम एंड आई एम स्ट्राइविंग टू अचीव दैट ड्रीम. ये मैनिफेस्टेशन जरूरी है. सो आउटवर्ड एक्सप्रेशन और साइंस ऑफ समथिंग. लोथिंग, टोटल हेट्रेड. आई लोथ लायर्स. मुझे बिल्कुल अटर हेट्रेड है उनसे. आई लोथ पीपल हु force their political opinions on others, who force it. Having a political opinion, good. Forcing it on others, not cool. So loathing, utter hatred, intense hatred. Condensation is अपने आप को, condescending हमने एक वर्ड किया था, याद है कल? हाँ, हनु तुम आए हो क्लास में. थैंक यू, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. अगर मैं 24-26 साल की होती तो मैं 14 साल से कैसे पढ़ा रही हूँ ऑलरेडी? +14 तो करना पड़ेगा ना तुमको. ओके, तो कॉन्डिसेंडिंग, पेट्रोनाइजिंग, मैं सुपीरियर हूं, मैं डॉन हूं, इस मोहल्ले का डॉन मैं हूं, है ना, तो दैट्स कॉन्डिसेंडिंग. मेलोड्रामेटिक, बहुत एग्जैक्ट. अच्छा, क्या आपके फैमिली में है कोई जो मेलोड्रामेटिक, आपकी छोटी बहन भाई, कि आज मम्मा मुझे हनु ने मार दिया, अब वो इतना ड्रामा करेंगे, छोटे भाई बहन इतना ड्रामा करेंगे, फुल मेलोड्रामा, मार दिया मार दिया मार दिया. They'll just, the moment your parents will step back home after work, they'll throw a huge tantrum, lie on the floor, keep crying कि आज तो मुझे हनु ने मार दिया, है ना. That's melodrama, overtly emotional exaggeration. That's what melodrama means. आई थिंक ये परफेक्ट एग्जाम्पल है छोटे भाई बहन का, ये मेलोड्रामा क्या होता है. जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थर्ड स्लाइड पे चलेंगे. थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स है उसमें. अनु, होता है तुम्हारे साथ ऐसा? चलिए आगे चलते हैं. स्लाइड नंबर 3. अच्छा, जितने लोग हैं अभी, प्लीज टेलीग्राम, तुम्हारी बहन करती है ऐसा, प्लीज टेलीग्राम ग्रुप में जो पोल चल रहा है ना उसका आंसर कर देना. आई हैव टू स्टार्ट अ बैच इन ऑगस्ट एंड आई नीड टू नो दैट फ्रॉम यू. whimsical,
हम whimsical पहले कर चुके हैं ना? हमने ये पूरी स्लाइड पहले करी है क्या? हाँ, ये गलत आ गया स्लाइड। Have we done this slide before? I pasted 3 slides, but पता नहीं for some reason ये कल वाली स्लाइड ही आज कॉपी हो गई। अय्यो, ठीक है, what I'll do is, don't worry, हम आर्टिकल पढ़ते पढ़ते वर्ड्स कर लेंगे और जो थर्ड स्लाइड होगी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। Fair enough? हाँ, we've done this slide before. Don't worry, जो थर्ड स्लाइड है I'll share it with you in the telegram group. Let's start with the article now. करना क्या है आपको? Read the paragraph, pause, ask yourself the topic and what is the author saying about the topic. हनु आप लिख के अपने नोटबुक में ये आंसर्स लिखेंगे इन दोनों का। अदर्स आप इसको मेंटली करेंगे, इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। ओके, टॉपिक क्या है? व्हाट इज द ऑथर सेइंग अबाउट द टॉपिक। फिर हम आगे पैराग्राफ में चलेंगे। लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, धीरे धीरे पढ़ो, पैसेज छोटा है, जल्दी से हो जाएगा। व्हाट इज द टॉपिक? वर्जीनिया वुल्फ की नॉवल का सेंटिनरी हुआ, 100 इयर्स मार्क किए, और फिर उन्होंने एक थ्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, उन 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया। What were the headings of the 3 topics that were being discussed? One was what she has to tell us today. 1. 2. How she captured and critiqued modern world. Modern world का analysis किया, capture किया, and that was the world was changing around her. 2. How she treated mental health as human experience rather than a mental condition. How does it sound to you? Treating mental health as a human experience rather than a mental condition. मेंटल हेल्थ को मेंटल कंडीशन ही नहीं माना। Sounds very good. Let's check it across the passage ahead. She also challenged gender norms that women should be at home working, taking care of the family, and men should go out and work. These are gender norms. She challenged it. तो ये भी बहुत अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा था. But mental health is a human experience and not a mental condition. Let's look at it ahead. Pause. Pause. Do the same thing. हनु आप लिख के करना।
वाह. They should certainly be killed. The first paragraph here says this writer started watching the first episode, but within 2 minutes he shut it off. Why? The reason is given in the second half of this paragraph. The reason, only a few days before, he read a diary entry of Virginia Woolf. There she wrote that I am suffering deep trauma at the time. Now, why was the author shocked with this diary entry? Why? She was suffering deep trauma. Why was he shocked? क्या समझ में आया आप लोगों को? Why was he shocked? What was the reason that after reading the diary entry of Virginia Woolf, the author was shocked कि ये कैसी लाइन लिख दी आपने? Let's see if you understand it. The answer to this question is in the next paragraph. He was shocked because the diary entry said she was suffering deep trauma. Deep trauma as a result of what she had witnessed in this hospital. So ये जो हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस था ना वर्जीनिया वुल्फ का कि these were just imbecile का मतलब stupid people. She's calling them stupid, miserable, idiotic creatures. They should be killed. And because of this, she was suffering deep trauma. This could shock anybody. Uska statement that they should certainly be killed could shock anybody, and that's the reason why, after watching the first 2 minutes, he shut that episode. I'm sure आप भी यही करते हैं. It's such a horrible recountering and recollection of what a person could experience in a mental asylum in this famous institution. Long line pass करनी पड़ी. First man was very tall, just queer enough to look at twice. But उससे ज़्यादा उसको हम देख नहीं सकते थे. And then there were miserable, ineffective, shuffling, idiotic creatures. They were horrible. Next paragraph पढ़ते हैं. Enough of it. Pause करके मुझे बताओ what does the paragraph talk about?
Now is the author happy about this third book, Beautiful Lives, how we got learning disability so wrong? He's happy about it, right? Because someone is giving a real life encountering of how everyone understood the specially abled and learning disability, people with learning disability, all wrong. And why did he understand this? He understood it because he had a 28-year-old son who was specially abled. So somebody who has a personal experience of that sort, उसके लिए बहुत easy होता है ना, ये दिखाना, ये बताना कि कैसे लोग गलत तरीके से देखते हैं डिसेबिलिटी को, how people have misunderstanding, hatred and appalling mistreatment experienced by millions of people because of their raw and inaccurate understanding of mental disability. That's what this paragraph says. Next paragraph. ये पैराग्राफ डिफिकल्ट है, ध्यान से समझना. Right, Imran, Udita. Okay. Topic of the paragraph. Is he appreciating Anwin's book and Anwin's encounter? 2. Is he criticizing the people for not giving Anwin's book the credit it deserved? I will repeat. क्या ऑथर ने अनविन की बुक को अप्रिशिएट किया है और क्या ऑथर ने आसपास के लोगों को क्रिटिसाइज किया है अनविन की बुक को अटेंशन ना देने के लिए? हाय सिमरन. यस, द आंसर इज यस. बोला एक भी मेन स्ट्रीम पब्लिकेशन ने रिव्यू नहीं करी उनकी बुक. इट फील्स शॉकिंग. और ये वही सेम लॉजिक फॉलो कर रही है ये बुक मेंटल डिसेबिलिटी के बारे में जो बाकी डिस्कशंस में होता है रेसिज्म के बारे में. फॉर एग्जांपल, ये लाइन समझो, ये इंपॉर्टेंट है. रेसिज्म के बारे में जब डिस्कशन होता है ना, तो सब लोग कहते हैं यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ रेकनिंग, तभी हम रेसिज्म को खत्म कर पाएंगे. वही लॉजिक फॉलो कर रहे हैं अनविन अपनी बुक में कि प्रोसेस ऑफ रेकनिंग फॉलो करना जरूरी है. क्या करने के लिए? मेंटल लर्निंग डिसेबिलिटी समझने के लिए. कोई डिफरेंस नहीं है. यही हम रेसिज्म और एम्पायर में यूज करते हैं, यही अनविन ने यूज किया है. फिर भी पीपल हैव नॉट गिवन द ड्यू द सुप्रीमली ओरिजिनल वर्क डिजर्व्स. दैट इज शॉकिंग टू हिम.
अंडरस्टूड द पैराग्राफ? यस, चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. पॉज. टॉपिक एंड व्हाट इज द ऑथर सेइंग अबाउट द टॉपिक. इस पैराग्राफ का टोन बताएंगे आप मुझे. I am new here from literature background and I wanted to ask, can I do preparation from variety sessions? Of course, Imran. Of course. आप सब मुझे इस पैराग्राफ का टोन बताएंगे. आर्ग्यूमेंटेटिव. उदिता आप बिल्कुल करेक्ट हो, बट थोड़ा और सीवियरिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा. मैं आपको बताती हूँ ऑथर ने ये किस एटीट्यूड के साथ लिखा है. कह रहा है मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना इस लैंग्वेज के साथ है. अब देखना कितनी सीवियरिटी हाई है. आर्ग्यूमेंटेटिव से भी बहुत ज्यादा. लेट्स अंडरस्टैंड दैट. ही सेज यू यूज द वर्ड imbecile, which means stupid. You use the word morons, cretins, idiots for people who have mental disability. We have asylums जिनका नाम क्या है? Asylum for idiots, institution for mental defectives. What are these names? Are they defectives? Are they idiots? Or the infamous description जो अनविन ने दिया था, widespread cruelty and high mortality rates in these institutions. हमने कितना भी हिस्ट्री पढ़ा दे हम लोगों को, we don't cover mental deficiency act. We discuss the mental deficiency act of the 1913 जहां forcefully बच्चों को बड़ों को institutionalize किया जाता था in asylums despite the unwillingness of the family and the people. ठीक है, और उनको idiots और imbecile कैटेगराइज कर दिया जाता था, बच्चे बूढ़े सबको. And even if the family disagreed, they would be forcefully kept into the prisons, in the asylums. And the local councils had the power to remove these people from their homes. Why? Is it not appalling? Is it not very disturbing? That's how the author feels writing this paragraph. He's appalled, he's disturbed, and he's aggravated. He's certainly arguing forcefully against this whole system, but बहुत ही disturbed तरीके से. It's not just arguing कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए बच्चे और मेहनत करनी चाहिए तब मार्क्स आएंगे. ये भी तो एक आर्ग्यूमेंटेटिव है, बट आई हैव टू शो अ टोन दैट्स मोर फोर्सफुल. तो अगर वो ऑप्शन होगा ना आप वो मार्क करोगे. ठीक है. हार्श क्रिटिसिज्म, यस यू कुड से, but not actually criticism, more severe argument. This paragraph. Pause here and tell me what is the topic and what is the author saying about the topic.
Do you see the tone that is mocking all these politicians? Brute Winston Churchill. Trailblazing intellectual Sydney. ये सब words mocking है या actually बहुत appreciative है to these people? Progressives. All of these are mocking. ये एक तरीके से criticism है to all of these politicians. वो ये कह रहे हैं कि जो प्रीवियस पैराग्राफ में थॉट प्रोसेस था हमारे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का कि ऐसा होना चाहिए इस एक्ट का, ऑल ऑफ दिस इज रॉन्ग. एंड यही सेम लाइंस पे ये सारे पॉलिटिशियंस चलते हैं. He called Winston Churchill a brute, an aggressive man is called a brute. He called D.H. Lawrence a person who wanted disabled people to be put into a lethal lethal क्या होता है? Something that causes death, a death chamber. इतना बड़ा वो बनाएंगे जितना बड़ा क्रिस्टल पैलेस है. मॉकिंग. अपने आप को आप प्रोग्रेसिव बोलते हो, ये आपके नाम है, आप भी यही सोचते थे. आप अपने आप को ट्रेल ब्लेजिंग इंटेलेक्चुअल्स की कैटेगरी में डालते हैं, आप भी यही सोचते थे. दैट्स आयरॉनिक. मॉकिंग. दिस वन. Pause here. What is the topic? What is the author saying? Here as well. Sarcastically, yes. देखो मैं नाजीज की बात करी थी. इस लाइन को 2 बार 3 बार पढ़ना, मुझे बताना इसका मतलब क्या है. फर्स्ट लाइन आई समझ में? It says discarnation of Nazi. Let me explain the first line. So it says the credo of pure and strong genes. Pure and strong genes ही survive करनी चाहिए. यही तो नाजी आइडियोलॉजी थी. तभी तो जूस को मारा गया था, डिसेबल्ड लोगों को मारा गया था by Hitler, right?
कि सिर्फ अब प्योर और स्ट्रॉन्ग जीन्स बचेंगे। तो ये जो आइडियोलॉजी थी, नाजी आइडियोलॉजी, ये तो हमने डिफीट कर दी, आज हम नहीं बिलीव करते इसमें। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि ये जो हेट्रेड है और कॉन्डिसेंशन ऑफ स्पेशली एबल्ड लोग है, ये खत्म हो गया है और ये भी आज हमें नहीं दिखता, तो आप मजाक कर रहे हो। नाजी आइडियोलॉजी तो खत्म हो गई कि प्योर और स्ट्रॉन्ग जीन्स को सरवाइव करना चाहिए, बट वी स्टिल हैव दिस थॉट लिंगरिंग ऑन अस that we hate people who do not have the strongest genes and pure genes. हम उनको हेट करते हैं, हम हम बिल्कुल कॉन्डिसेंडिंग वे में उनको देखते हैं, अपने आप को सुपीरियर मानते हैं. It still lingers on. That's what the line says. Now, don't forget that we are in the age that in 2011 we saw a scandal where all this happened. People with learning disabilities were left out in freezing weather with mouthwash poured into their eyes and given cold showers as a punishment. इसका मतलब हम अभी भी we hate people with learning disability. We use a condescending attitude and treat them with condescension, and we ignore them. We treat them ruthlessly. The year 13, एक और एग्जाम्पल में कैसे अनविन ने एक प्ले बनाया था और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से ड्रामेटाइज किया था एक लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ एक बच्चा जो था, which is nonetheless named as Laughing Boy. He wanted to show how this light-hearted but dramatized book and play can make an impact. Pause, do the same thing. स्ट्रॉन्ग जीन्स के आइडिया को नाजी के डिफीट ने कमजोर कर दिया और ये आइडिया आगे नहीं बढ़ने देना है. वेरी गुड. लेकिन अभी भी लिंगर ऑन कर रहा है, ये दिखता है अभी भी हमको. इस पैराग्राफ का टोन बताइए मुझे. एक्सपोजिटरी, एनालिटिकल, नहीं बच्चे एक्सपोजिटरी तो नहीं होगा. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज द ऑथर इज नॉट, ही इज जस्ट गिविंग यू डेटा. Okay, so right now these many people are still struggling. Data, only 5% have a job,
6 out of 10 die before the age of 65. ओनली डेटा. सो फैक्चुअल हो सकता है, ये ना न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज का एक कॉलम हो सकता है. एक्सपोजिटरी होता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेज वाला. सो दिस कैन बी फैक्चुअल. एनालिसिस भी नहीं है क्योंकि इसको प्रोसेस करके कुछ कंक्लूजन नहीं निकाला गया. जस्ट टेलिंग मी इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेटिव बोल सकते हो. अंडरस्टूड? चलो आगे देखते हैं. आई थिंक सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है. यस, पॉज करो, टॉपिक बताओ. The first line is important. Please pay attention to it. What does the first line say? But this is also a time of growing learning disabled self-advocacy, where the disabled have to stand up for themselves as self-advocates. The society is working on for them. Also need to stand up in such a way that they self-advocate in such a manner that change in the society becomes unavoidable. चेंज लाना ही पड़ेगा, आपको इतना फोर्सफुली सेल्फ एडवोकेसी को फॉलो करना पड़ेगा. ये होना जरूरी है. All of these are examples of people and a conference he was a part of. लेकिन वो लोगों ने भी ना जो किया वो completely unremarkable था. He was not very impressed. So you have to stand up for yourself and say no, change लाना ही पड़ेगा. That's what he's urging. Yes, correct. क्लोजर पैराग्राफ देखते हैं, साथ में पढ़ते हैं. इट मे साउंड अ लिटिल मेलोड्रामेटिक, लगे ना कि अरे इतना बड़ा क्या ड्रामा कर रहे हो, बट इट इज ऑल्सो ट्रू. सच पीपल एंड allies like अनविन आर एट द कटिंग एज ऑफ ह्यूमन लिबरेशन. बिल्कुल कस्प पे हैं ह्यूमन लिबरेशन की, जहां सबको लिबर्टी मिलेगी, स्पेसिफिकली द people with learning disability. Far too many others may not have the same grim idea as Wolf, Lawrence, Keynes and all the rest. सब इतना खराब नहीं सोचते आज की डेट में जितना ये लोग सोचते थे, है ना? But awareness and neglect sit somewhere on the same awful continuum. देखो आज अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को पूछोगे तो वो इतने हेट्रेड के साथ नहीं बात करेंगे. इम्बिसाइल, स्टूपिड, जैसे वुल्फ ने बोला और बाकी लोग बोलते हैं. लेकिन थोड़ी अनअवेयरनेस, थोड़ी सी नेग्लेक्ट, आई हैव सीन एज अ चाइल्ड इन, और मैंने देखा है
एक person who used to stay in our neighborhood who was mentally unstable, जिसको बांध के रखते थे वो, एक हाथ किसी पोल से बांध देते थे. आई हैव सीन दैट एज अ चाइल्ड. तो हेट्रेड नहीं है, लेकिन अनअवेयरनेस है, नेग्लेक्ट है, और वो भी उतना ही ऑफुल है जितना खराब वुल्फ ने बोला था. इम्बिसाइल, स्टूपिड, दे शुड बी किल्ड. नेग्लेक्ट भी उतना ही खराब होता है. That only highlights an obvious political fact that all of us ought to appreciate as a matter of instinct, that the present and future will only be different if we understand the past. What was our past? What Wolf said, what institutionalization was. And only then you will be able to change the present and the future. That's the suggestion. तो ये लाइन ना एक suggestion सा की तरह आ गया. अब जल्दी से एक फ्लो चार्ट देखते हैं. ओपनिंग पैराग्राफ एक ट्रिगर था वुल्फ का पूरा एनकाउंटर बता के. हिस्टोरिकल प्रेजुडिस, वुल्फ की डायरी में जो लिखा हुआ था, आई हैड टू स्टैंड इन अ लाइन, लुक एट दीज इम्बिसाइल स्टूपिड पीपल. प्रेजुडिस था ये, है ना. इंट्रोडक्शन टू द बुक द ब्यूटिफुल लाइव्स, अनविन की बुक. द पैराडॉक्स ऑफ साइलेंस, नोबडी इज डूइंग एनीथिंग ऑन इट. हिस्टोरिकल एट्रोसिटीज एंड यूजेनिक्स, हिस्ट्री में कैसे माउथ वॉश डाल दिया, वो तो हिस्ट्री भी नहीं था, वो तो 2011 था, है ना. और कैसे वो यूजेनिक्स की बात करते थे, नाजी की बात यहाँ हुई है. गुड जीन्स के लिए सारे खराब जीन्स को मार दो, प्योर जीन्स बचेगा. मॉडर्न डे फेलियर्स, नो वन इज डूइंग एनीथिंग, देयर आर नो effective measures being taken. Signs of hope. If they self advocate, if they show resistance, people will listen to them. Closing reflection, let's learn from the past to make a better future. That's, आपने भी देखा है. Yeah, that is pitiful. Okay, but अब काफी चीजें चेंज हो गई है. On a bright side, people are more aware. In fact, दो चीजों को लेके अगर आप, and I'm sure you will agree, चीजें बहुत चेंज हुई हैं last 20 years में. I mean, probably that's how old you are right now, but last 2 decades में ना LGBTQ को लेके उनका अवेयर, सोसाइटी का अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस, और मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस, ये दोनों चीजें बहुत मैसिवली चेंज हुई हैं. दिस इज नॉट अ PYQ. दिस इज अ पैसेज दैट अपीयर्ड अ फ्यू डेज बैक इन द गार्डियन, जिसको हमने पैसेज बना दिया. आज अभी क्वेश्चंस करेंगे हम. ये PYQ नहीं है, ये पैसेज बना के लाई हूं मैं. मैंने बहुत मेहनत करी इसको बनाने में. ऐसे मत बोलो मैंने PYQ उठा के ला दिया. मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देती हूँ, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो. सिमरन, या you'll get to know everything there. हमने वोकैबुलरी कर ली थी. आई होप you've taken a screenshot of it. If you've not, जल्दी से ले लो. Absolutely. ये हम पहले कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 1, आंसर बताइए मुझे. व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज? बहुत इजी है. अच्छा, यू वांट PYQ. PYQs तो आपको बहुत मिल जाएंगे. जस्ट हैव टू गूगल. हमारे ऐप में भी होगा, आई एम श्योर, लॉट्स ऑफ इट. PYQ ढूंढना डिफिकल्ट नहीं होता. इसका आंसर बताइए सब लोग. Good job. It is B. Absolutely. Historical and ongoing mistreatment. Correct. Of learning disabled people reveals a deep social prejudice. And to change it, you have to recognize it and accept the past and study it and then ensure that it changes ahead. Correct. भाई बेंगलुरु में इतनी ठंड हो रही है ना, I can't tell you. It is उत्तराखंड हिमाचल जैसा हो गया वेदर. Next question. Which of the following can be most reasonably inferred from the passage?
Yes, Simran. Yeah, right, Simran. इसका आंसर okay, Imran. Others? Reen, you're reading with us. I had no idea. It is C. Undoubtedly. देखो A का तो total opposite is given in the passage. ठीक है? Virginia Woolf's views represent a rare exception. No, she was just like the others. Critical and demeaning in her tone towards the disabled people. Wrong. She was no exception. The eugenics ideologies of past intellectuals continue to overtly influence. This word makes it wrong. The eugenic ideologies, it does influence the modern policy, but overtly मतलब बहुत ही ज्यादा. ये word ना इस पूरे line का tone change कर देता है, and this is what makes it wrong. Of course, the line we read tells us that the influence is still there, even if the Nazi ideology, eugenic ideology was discarded. Yet, we see some influence still today, not overtly though. Neglect and prejudice towards learning disabled people, it persists. It persists subtly, but it still does. उतना strong नहीं है, लेकिन अभी भी है neglect. Government reforms have eliminated institutional cruelty. नहीं भाई 2011 की तो एग्जाम्पल दिया था आपको. Pouring mouthwash in the eyes and what all. भाई terrible है तो, है ना? Exactly. Next question. Tone. Detached and analytical, celebratory and nostalgic, critical yet hopeful, defensive and skeptical. दो क्लोज ऑप्शंस हैं. नहीं बच्चे, मोर एक्सट्रीम नहीं होगा. All right, Rain. Rain, when you come to my class, say hi to me so that I know you're here. है ना? It is C. Although D may look like a close option to you. कि डिफेंसिव तो हो रहा है. But skeptical नहीं है. Skeptical मतलब doubtful. He's not doubtful of the future. He's hopeful कि future better होगा. इसीलिए हम hopeful वाला ऑप्शन चूज करेंगे over doubtful. It's C. Which of the following, if true? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है. इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ये होमवर्क है आपका. इन द कमेंट सेक्शन, नॉट इन द चैट बॉक्स राइट नाउ. ध्यान से इसको देखना आफ्टर आई एंड माई वीडियो. उसके बाद आप कमेंट कर पाओगे मेरे वीडियो के नीचे. कमेंट में आंसर बताओगे. ये डिफिकल्ट है, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. एक एक ऑप्शन को एनालाइज करना पड़ेगा. एंड दैट माई चिल्ड्रन, it brings us towards the end of the class. 11:11. I hope you have a good day, everyone. Work really hard. See me in the class at 5. हम para completion start करेंगे आज. Work very hard, everyone. Ensure that you comment with the answer. Bye bye, everyone. God bless you.